Breaking developments coming in and some news coming in from Kartihar in Bihar, where we're understanding a large number of villagers were protesting against the power electricity disruptions in Barsoi block office premises today as part of a scheduled program to control the angry people. The police first fired in the air and then lathi charge and then dispersed the crowd. But now we're understanding 3 people were reported to have been shot according to the local people, and the big news is that 1 person allegedly has lost his life. There is understandable tension in this entire area. We're putting out some visuals on our screens as well. The district officials, we're understanding, have left for the spot as well. Let's also now bring in our colleague Saurabh Rathore to try and get better context. So Saurabh, help us understand what was the protest that was happening, and now we're understanding 3 people were in fact shot, out of which 1 person unfortunately is already succumbed to those injuries. See, the protest that was taking place was because of the power disruption. The farmers were complaining that they were not getting proper power and electricity so that they could use it on their fields. And because of that, they were facing a lot of problems because of the monsoon. Also, its rainfall is in scarcity, and so they had to use motors for watering their field. And because the power supply was not adequate, they were protesting against the government, asking for more power supply so that they could use motors in their fields. And this after this protest, they were sitting on a dharna in the block over there, and then police, while dispersing the crowd, they first fired in the air and also started lathi charging. And during this Saurabh, I apologize for interrupting. I'll just request you to stay on with us. We want to take in a reaction from the BJP as well. Guru Prakash Paswan now joining us. Guru, good to have you with us here on CNN News 18. Some very initial information coming in, but unfortunate news coming in. There was protest that was happening on the ground as far as power electricity disruptions are concerned. The police resorted to first firing in the air, and then 3 people were shot, out of which 1 person has already lost his life. I just came to know of this news by your channel, and I think this is a deeply moving news. But in a sense, it also shows the true character of the present government in Bihar. And this is not the first time this is happening. All of us remember that on July 13th, in the capital of Bihar, in Patna, when Bharatiya Janata Party was carrying a peaceful protest, similarly, the brutal use of state force was exercised, and our Karyakartas became a victim of it. So this Tanashahi, this dictatorship has embarrassed Bihar. All of us are aware that Bihar is a land of democracy. It was the land of Bihar that 2000 years ago in the Vaishali Republic, the idea of democracy first emerged. It was the land of Bihar where Jai Prakash Narayan revolted and raised his voice against the emergency movement. And in the same Bihar, there is a government that is being atrocious, that is being brutal, that is being lawless in its use of sheer force. This is deeply problematic, and we will raise this point in the Vidhan Sabha, on the streets of Bihar, and we will make the government of Bihar accountable. Okay, so 2 things that I want to understand, Guru. One, you've already touched upon that what is going to be the future course of action as far as the BJP is concerned. But secondly, you're saying that there is a pattern that is being seen as far as the brutal use of force is concerned. Why do you think that is happening? 100%. Look, the CM of Bihar, Mr. Nitish Kumar, has taken a backdoor entry to power. He hasn't won the mandate of the people. You look at the arithmetic of the Bihar Assembly, Nitish Kumar's Janata Dal United is the 3rd party. After the RJD and the Bharatiya Janata Party, it is his backdoor entry to power, and just to exercise political legitimacy, he is indulging in all sorts of political violence, which is unacceptable and unwarranted in a democracy like ours. Guru, I'll just request you to stay on with us because I want to take in a reaction from the JDU as well. Anjum Ara now joining us on the broadcast. Help us understand what is happening as far as the state is concerned. The BJP is saying there is brutal use of force that continues to be used. देखिए, जो घटना घटित हुई है कटिहार में, जस्ट इसकी जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई है, लेकिन सीधी सी बात है कि किसी भी व्यक्ति को
अपनी बातों को प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्ण ढंग से करने का संविधान में अधिकार है और ये उसको राइट जाता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिला है इस देश के कानून के माध्यम से कि वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए या तोड़ फोड़ करे या विधि व्यवस्था कानून को अपने हाथ में ले। जब इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है तभी रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी अभी बहुत अपडेट में नहीं हूँ, मैं अभी ऑन द वे हूँ और पहुंच करके मेरे सारे तथ्यों की जानकारी लेकर के ही मैं विस्तृत रूप से टिप्पणी इस पे कर पाऊंगी। जी अंजुम जी हमारे साथ बने रहिए। वी ऑल्सो हैव शक्ति यादव ऑफ द आरजेडी ऑल्सो नाउ ज्वाइनिंग अस। शक्ति जी, क्या हुआ है कटिहार में, क्या जानकारी है आपके पास? क्योंकि बीजेपी कह रही है ये तो कोई पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है, ना तो आखिरी बार होगा। एक ब्रूटल यूज ऑफ फोर्स का हम देखते आ रहे हैं बार बार, ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में? नहीं, कटिहार की पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया में जो रपटे आई है वो बिजली को लेकर करके जा करके घुस करके लोगों ने पीट पाट की थी, अफसरों को पीटा गया था और उग्र हो गए थे लोग। शायद पुलिस ने उसको काबू करने की कोशिश की थी, हवा में फायरिंग की थी, लेकिन जहां से भी जिस रूप में भी अगर कहीं कानून टूटा होगा या पुलिस बल के द्वारा टूटा होगा या जहां से भी अगर पुलिस दोषी होंगे तो मैं आपको शक्ति जी कहीं तो कानून टूटा ही है, क्योंकि पुलिस ने सिर्फ पहले लाठीचार्ज करी, उसके बाद तीन लोगों को चोट लगी और एक कंफर्म डेथ तो ऑलरेडी आ गई है सामने, तो कहीं तो कानून टूटा ही है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं पहले सुन लीजिए। मैंने कहा कि अगर कानून टूटा तो पुलिस वाले हों या आम आदमी हो, सबके लिए कानून बराबर है। कानून का रखवाला हो या कोई भी हो, कानून तोड़े होंगे तो पुलिस वाले भी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि कानून का राज है। जिन लोगों ने एजिटेशन को कंट्रोल करने में पुलिस जहां नाकामयाब साबित हुई है या फिर उनको जिस रूप में फायरिंग करनी थी उससे इतर कोई बात हुई है, तो उन सारे चीजों को पड़ताल कर करके जांच कर करके कठोरतम कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ जिन लोगों ने गोलियां चलाई है जानबूझ करके या जिस रूप में भी। अगर पुलिस की अगर इसमें प्रथम दृष्टया में पुलिस की दोषी पाए जाएंगे तो पुलिस वाले भी बख्शे नहीं जाएंगे। अच्छा शक्ति जी हमारे साथ बने रही है। आई वांट टू गो बैक टू अंजुम आरा एज वेल। अंजुम जी, अभी मैं बीजेपी के जो स्पोक्सपर्सन है गुरु प्रकाश से थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि ये तो आपको सही पिक्चर दिखाती है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है बिहार में। स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, पुलिस और बाकी अथॉरिटीज की मनमानी काफी टाइम से चलती आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कहीं से भी मोरालिटी, नैतिक पात्रता नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे विषय पर वो प्रवचन दे। हमारी सरकार बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है पूरी तरह से अकाउंटेबल है इन सारी चीजों को देखने के लिए। जो कोलैप्स कर चुके हैं, फेल कर चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, कोलैप्स, तो उस पर मुंह नहीं खोलेंगे। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय प्रवक्ता शक्ति यादव जी ने कहा कि अगर किसी की भी गलती पाई जाएगी तो यहाँ सुशासन है, कानून का राज है, कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या फिर एक आम व्यक्ति हो। लेकिन जो घटना घटित हुई है यह स्पष्ट है कि वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई है, सरकारी संपत्ति को नुकसान करने का प्रयास किया गया है, जिसको नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की गई है और ये घटना घटित हुई है। मैं फिर कहूंगी कि मैं अभी ऑन द वे हूँ, बहुत अपडेट नहीं हूँ इस विषय को लेकर के, मैं लेकर के ही विस्तृत टिप्पणी कर पाऊंगी। अच्छा